हेलो एवरीवन, आई होप्स आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, share the video with your friends, like this video and please press the bell icon. Thank you. So this video lecture is based on class 10th electricity. Enjoy the video. Topics, you can see the electricity of class 10th and we are going to discuss these 12 topics today. Okay, so let's start. The first topic is charge. Today's first topic is charge. The question is, what is charge? Charge क्या है? So we have discussed in the last lecture, the topic was gravitation, and the first topic was of that chapter, gravitation, was universal law of gravitation. So I am going to give you a quick recap of that universal law of gravitation. You have seen in that universal law of gravitation there was two masses, m1 and m2, and these two masses are separated by a distance r. So these two masses are attracting each other with a force of g m1 m2 upon r square. We have already seen this. दो मैसिव पार्टिकल हैं, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इज जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. नेचर क्या है इस फोर्स का? इस फोर्स का नेचर है it's attractive. So two massive particles always attract each other with a force. So अगर दो मैसिव पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करके रिपेल कर दें, if there is a force of repulsion, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर दो मैसिव पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये रिपल्सन कहाँ से हो गया? ठीक है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा आइदर दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग और देयर इज समथिंग मिसिंग इन दिस कॉन्सेप्ट. तो नाइदर इज दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग नॉर anything missing in this concept. There is some addition, like we are only discussing about the mass of a particle. We are only discussing about the mass of a particle. We are not talking about any other internal properties. So the other internal property of a body which is responsible for repulsion is charge. तो मास के अलावा बॉडी के पास और क्या होता है? चार्ज. चार्ज क्या होता है? चार्ज अट्रैक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है एंड रिपल्सन के लिए भी. अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों के लिए ही चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है. लाइक हमने हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ा होगा कि अपोजिट अट्रैक्ट्स एंड सेम रिपेल्स. ओके, तो चार्ज क्या है? एक इंटरनल प्रॉपर्टी बॉडी का मास के अलावा जो कि रिपल्सन में रिपल्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, तो चार्ज यू कैन से इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. ओके, तो वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव चार्ज दे बोथ विल अट्रैक्ट. two positive charge will repel and two negative charge will repel. Let's say if you have two charge, one is q1 and other is q2 and they are separated by a distance r. Same like this, two masses are separated by a distance r. Here two charges are separated by a distance r. The force of attraction or repulsion, anything can possible, is it's k q1 q2 upon r square. It's k q1 q2 upon r square. You can see quite similar from this. The nature of this force, it could be attractive as well as repulsive. Fine. So you have understood what is charge. Charge is also an internal property like mass, but mass is only responsible for attraction and charge is responsible for attraction and repulsion both. So what is the unit of charge? The unit of charge, you have to understand what is unit of charge. Charge is discovered by a great scientist Coulomb. So Coulomb has given the unit. Unit of charge is Coulomb, C-O-U-L-O-M.
B. It is denoted by C. The unit of charge is coulomb. It is denoted by C. Okay. Again, there is another property of charge, which is quantization of charge. I am writing here quantization of charge. Okay, fine. Quantization. What is quantization? Quantization is Q is equals to NE. What is Q here? Q is charge of a body. Charge of a body. What is N here? It is number of electrons. And what is E here? Charge on one इलेक्ट्रॉन. अगर आपको किसी भी बॉडी का चार्ज फाइंड करना है Q, तो आप पता करो कि उस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसको आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये Q की वैल्यू मिल जाएगी. ये आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हेल्प करता है. ओके, तो यहाँ पे E की वैल्यू फिक्स होती है. इट इज़ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम, और ये माइनस में होता है. तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस ऑफ 19. It is visible for you all. So what we have studied? We have studied about charge, which is positive, negative. The force between two charges are attractive and repulsive both. Quantization of charge. Like charge has two different properties, like charge is conserved and charge is quantized. Conserved is quite familiar for all of us. Like energy is conserved, so energy can neither be created nor be destroyed. So same with charge. But quantization is something which you never heard, I hope. If you have heard, if you in class 12 आपने सुना होगा, बट क्लास 10th में कम सुनते लोग. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल्स टू NE. तो इससे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे कि ज़्यादा आसानी हो हमें क्वांटाइजेशन को समझने में. ओके, तो आई एम इरेजिंग दिस सेक्शन. Let me erase this section also. The question is, if my body has charge of 9.6 into 10 to the minus 19, the value of Q is given. The value of Q is 9.6 into 10 to the power of minus of 19 coulomb. Then how many electrons my body have? Means the value of N is questionable here. Okay, so we have from the quantization of charge Q is equals to NE. Then we will have N is equals to Q divided by E. The value of Q is 9.6 into 10 to the power minus of 19. And the value of E is 1.6 into 10 to the power minus of 90. It will get cancelled. It will get 6. The number of electron here is 6. अगर एक बॉडी में का चार्ज इतना है तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको हम इस प्रोसेस से फाइंड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करना है हमें. टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट. लेट मी राइट इलेक्ट्रिक current. Electric current, it is denoted by small I and you can denote it with capital I, doesn't matter. Electric current means it is the rate of flow of charge.
Electric current means rate of flow of charge. It means rate means divided by time, and flow of charge means charge, Q divided by T. You can write its unit. Its unit is ampere, or you can write in a short AMP, or you can write in short A. तो electric current का definition, rate of flow of charge, it is the formula of electric current is I is equals to Q divided by T, and the unit of electric current is ampere. You can denote it with AMP, you can denote it with A only. Okay, so what is the unit of current? You understood? From here you can write the unit of charge is coulomb and the unit of time is second. So coulomb per second is also a unit, and it also reflects ampere. Ampere and coulomb per second both are same. Kindly write it down. So our next topic is potential difference and potential difference. The topic is potential difference. Okay, so what is potential? Potential is basically strength. Potential means strength. So what does potential difference or potential helps you in electric current? जैसे कि आप सोचो, मैंने इस पोजीशन पे अपने हाथ को रखा है, ओके, और यहाँ पे मैं 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दूँ, तो ये वाटर कहीं जाएगा नहीं, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे करूँगा, द वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग, तो वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा. तो पहले वाले में वाटर ने फ्लो क्यों नहीं करा? क्योंकि ये सेक्शन और ये सेक्शन दोनों ही सेम पोटेंशियल पे हैं. ये दोनों ही सेक्शन सेम पोटेंशियल पे हैं. जैसे ही मैंने इसको डाउन करा तो ये अप है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल डिफरेंट है, तो वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग. सेम विद द इलेक्ट्रिक सर्किट. एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं आएगा, एंड करंट नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं कर सकते. अगर आपके पास एक सर्किट में बल्ब है, आपको बल्ब को ग्लो करना है, तो यू नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे कि मान लो मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ओके, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बल्ब लगाया मैंने, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ अ बल्ब. अब आपने इस बल्ब को ग्लो करना है, ठीक है. अब मैंने इसमें एक स्विच लगाया है, दिस इज द सिंबल ऑफ अ स्विच. तो इसमें एक बैटरी लगानी पड़ेगी. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी. जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, इस पॉजिटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रिक करंट निकलता है आई, और ये करंट जैसे ही फ्लो करता हुआ जाता है, इस बल्ब को जैसे ही करंट मिलता है, ये बल्ब ग्लो करती है. ठीक है, आप स्विच ऑफ करोगे, करंट जाना बंद हो जाएगा, स्विच ऑन करोगे तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा. तो आपने देखा कि बैटरी की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है. तो ये बैटरी जो है एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है. एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी है? जिससे कि करंट का फ्लो हो सके. करंट का फ्लो होना बहुत जरूरी है. आप देख रहे हो यहाँ पे करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? ऐसी है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव. ओके, तो पोटेंशियल क्या है? स्ट्रेंथ है. एंड पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया, पोटेंशियल को आप V से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय V बोथ, एंड इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज. इसको डेफिनेशन में हम अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट. इसकी यूनिट आप लिख सकते हो जूल पर कूलम, या इसकी यूनिट होती है वोल्ट, एंड इस वोल्ट को भी हम V से डिनोट करते हैं. तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट करते हैं, और उसकी यूनिट को भी V से ही डिनोट करते हैं. ओके, so our next topic is Ohm's law. Ohm's law. Ohm was a very big name in science. Ohm's law.
Ohm has given a law which states that potential difference V is directly proportional to electric current I. Okay, it relates V and I. ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट को रिलेट करता है. पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट. जैसे ही आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो इक्वल आएगा एंड इसके साथ क्या आता है एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे R. R क्या है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या करती है ये करंट के फ्लो को अपोज करती है. इट अपोजेस the flow of करंट के फ्लो को अपोज करती है. यू कैन ऑल्सो से इट सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि करंट का फ्लो अगर बहुत फास्ट होगा एक वायर में तो इट कैन मेल्ट दैट वायर, तो कंट्रोल करती है. जैसे कि अगर आप फर्श पे चल रहे हो एंड वहां पे किसी ने कोई भी लुब्रिकेशन या ऑयल या सर्फ वाला पानी डाल दिया तो आप स्लिप हो जाते हो. ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आप स्लिप नहीं होते हैं. तो फ्रिक्शन क्या करता है आपको, फ्रिक्शन आपको चलने में सपोर्ट करता है. वैसे ही रेजिस्टेंस क्या करती है वो करंट के फ्लो को सपोर्ट करती है. ओके, तो अनदर टर्म रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट ओम ने अपने नाम पे दे दी ओम, और इसका सिंबल होता है ऐसा. इस सिंबल को हम कहते हैं ओमेगा. ओके, this is all about Ohm's law. You can write R is equals to V divided by I. V की यूनिट क्या होती है वोल्ट और I की एम्पियर. तो आप इसकी यूनिट वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा फेमस क्या है ओम. दोनों ही एक ही बात है. You can see the question written on the board. The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उस इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 60 वोल्ट है और करंट कितना ड्रॉ हो रहा है 4 एम्पियर. तो कह रहा है क्वेश्चन कि अगर इस 60 वोल्ट को हम 120 वोल्ट कर दे तो वो 4 एम्पियर कितना होगा. क्वेश्चन में कह रहा है कि V इज इक्वल टू 60 वोल्ट. ओके, करंट I इज इक्वल टू 4 एम्पियर. फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो R विल बी इक्वल टू V अपॉन I. तो वैल्यू ऑफ V इज 60 and the value of I is 4. It will be 15 of ohm. तो रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, क्योंकि हीटर वही है तो उसकी रेजिस्टेंस को, उसकी आप वोल्टेज को इंक्रीज करो या करंट को इंक्रीज करो, उसकी रेजिस्टेंस सेम ही रहेगी. ओके, तो सेकंड सेक्शन में आपको V डैश की वैल्यू गिवन है 120 वोल्ट और आपके पास रेजिस्टेंस है 15 ऑफ ओम. तो यू हैव V is equals to IR, तो I is equals to V dash upon R. The value of V dash is 120 and the value of is 15. You know 120 divided by 15. You know the table of 15. 8 times 8 of ampere. Kindly write it down. तो अब हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस. जैसे कि रेजिस्टेंस को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है. जैसे फर्स्ट है, अगर आप वायर की लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. अगर आप एरिया को इंक्रीज करते हो तो ये डिक्रीज होता है. तो रेजिस्टेंस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो अगर आप इन दोनों को मर्ज करते हो तो ये हो जाता है R is directly proportional to L divided by A. अगर अब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो इक्वल आता है और यहाँ पे आता है एक कांस्टेंट, तो ये होता है रो L by A. इसे हम कहते हैं रो, RHO रो.
तो रो एक्चुअली में क्या है, ये है रेजिस्टिविटी, यहां लिख देता हूं मैं। रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाई एल, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट फाइंड कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर एंड लेंथ की मीटर। तो मीटर विल कैंसिल 1 मीटर, इट विल बिकम ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है आर ए डिवाइडेड बाई एल एंड इसकी यूनिट है ओम मीटर। So you can see the question on the board. It is based on the last topic, and the last topic was factors affecting resistance. So we had a formula R is equals to rho L upon A. The question is, a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. Okay, what would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? So we will discuss it like line by line. The first sentence, the first line, the wire of given material having length L and area of cross section A. Let's say the solution is here. Given resistance, let's say R is equals to 4 ohm given, and the formula of resistance is rho L divided by A is given to 4 ohm, and यही क्या है आपका रेजिस्टेंस है। ये फर्स्ट लाइन जो है वो सिर्फ इतना ही है। ओके, नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, what would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? Let's say another resistance R dash is equals to rho L, instead of L we will put L by 2 divided by 2A. It will become 1 by 4 times of rho L by A. So R dash will be equal to 1 by 4 and the value of rho L by A is 4, so it will become 1 ohm. So the resistance of the another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A is 1 ohm. Done. You can write it down. So we have new topic, resistances in series and resistances in parallel. First of all, resistance has a symbol like this. This is one resistance. Now I'm connecting 3 resistance. Let's say you can connect 4 resistance, 5 resistance, 100 resistance. The formula will be same for all. So I'm connecting at least 3 resistance in series. In series means they all will lie in one line only. Okay, let's say the resistance of this resistor is R1, it will have R2, R3. Now R1, R2, R3, they all are in series. Now I want to add resistances in parallel. Now this R1, R2 and R3 are in parallel. Okay, fine. Now if I am giving current to this circuit, let's say the current I, this I will reach to R1, the same I will reach to R2 and the same I will reach to R3, means current will remain same for all the resistors R1, R2 and R3. It means that in series current is same. Now come to this topic. If you will give current I to this section, it will divide into 3 parts. Let's say the first part is I1, the second part is I2 and the third part is I3. So every resistor has different current, like R1 has I1, R2 has I2 and R3 has I3. So current is different here. Current is different here. Now let's talk about the potential difference.
We have let's say the potential difference of the entire circuit is V. It means that this section will have potential V and this section will have potential 0. Then we will have V minus 0, potential difference will be V. But what is the potential difference of this section R1? What is the potential difference of this section R2? What is the potential difference of this section R3? Let's say this point is 1 and this point is 2. It means that this point will have potential difference V1 and this point will have potential difference V2. So if someone will ask you what is the potential difference of R1, you will say V minus V1. What is the potential difference of R2? You will say V1 minus V2. What is the potential difference of R3? You will say V2 minus 0. That is fine. So the potential difference, I am writing in the potential difference, is different here. Different for all the resistors. Now here the potential difference here is V and here is 0. The potential difference for R1 is V minus 0V. The potential difference for R2 will be V minus 0V. The potential difference for R3 will remain V minus 0V. It means that in parallel connections, potential difference remain same. The potential difference is same here. So you have 1 mark questions here. If someone will ask you what is the current in series, you will say same for all, potential difference different for all, potential difference same for all, and current is different. तो दोनों में switch हो रही है. Now let's come about the effective resistance, the resultant. Okay, let's say we have V is equals to IR. We all know from Ohm's law. So we can apply here. V is the potential difference. What is the potential difference of R1? It is V minus V1. And the current is I and the resistance is R1. For this I can write V1 minus V2 is equals to I R2. For this you will write V2 minus 0 is equals to I R3, and simply add all these three. V1 will cancel V1, V2 will cancel V2. It will remain V minus 0, that is V is equals to I will come as a common, R1 plus R2 plus R3. We have V is equals to IR. So IR is equals to I times of R1 plus R2 plus of R3. This I will cancel this I. Now our final answer will be R is equals to R1 plus R2 plus R3. Simple. In series connection, you can add it like this: R1 plus R2 plus R3. If this section has resistance 1 ohm, 3 ohm and R3 has 7 ohm, so what will be the value of R? It will 1 plus 3 plus 7, that is 11 of ohms. Simple as that. Okay, now come here. You can write here I is equals to I1 plus I2 plus I3. What is I here? V is equals to IR, so I is equals to V by R. You can write V divided by R and will remain V by R1, V by R2 and V by R3. You can common and cancel V. It will remain 1 by R is equals to 1 by R1 plus of 1 by R2 plus of 1 by R3. Now this is the final value of resistance. Okay, now let's say again the value of 1 ohm, 2 ohm, 4 ohm. How you will solve this? 1 by R is equals to 1 by 1 plus 1 by 2 plus of 1 by 4. It will remain 1 plus of, let's say the 8. 8 plus of 4 plus of 2. 14 divided by 8. So the value of 1 by R will be 7 divided by 4. Then R will remain 4 by 7. Always remember, at the end you have to reverse your value. Okay. So this is all about resistance in series and resistances in parallel. Thank you. So I hope you guys have enjoyed the video. So please
Do like the video, share the video with your friends, subscribe the channel and press the bell icon for the notifications. Thank you.